So hello and welcome to another class on Swayam Pathshala Odisha. Today we are again going to discuss on the chapter electrostatics. Today I will talk about electric field due to a point charge, electric field lines or the lines of force, the electric field due to a dipole. I will discuss about what is a dipole and what is the electric field due to a dipole, a point charge in an uniform electric field and dipole in an uniform electric field. Obviously, the talk will be bilingual, that is both in English and Odia. I will translate some of the basic points in Odia. Okay. So let us discuss. In the first class, I have already taught about Coulomb's law, or the force of attraction or repulsion between 2 point charges. We have discussed some problems also on Coulomb's law. So today we'll proceed further. We'll see what is electric field. Let us understand what is an electric field. Okay, so here is a man standing with his arms stretched and he is performing yoga. Okay, so today is 21st June. Today is International Day of Yoga. So this man is performing yoga with his body stretched or his arms and legs stretched. So what is the maximum distance up to which this man can stretch his arms? Suppose this is the maximum distance. Okay, so this is the maximum distance with up to which this man can stretch his hands. Okay, so this is the range of we can say that the range of this man is suppose this is 50 centimeter or this is 50 centimeter. Okay, so if another man comes within this range, that means within the range of this range of his arms, so definitely that man will experience some force. So let us see. So here is the man. Okay, so don't laugh at these pictures. So these are just visuals to clarify. So what is the electric field and why it is a vector quantity? Okay. So suppose another man is coming within the range of the arms of this man. So definitely this man will experience some force. Either this man will pull his ears or either this man will slap this man and hit him. Okay, so definitely again we can see these configurations in the form of a charge. Okay, so let us consider a charge plus q at here. Okay, so and let us consider the range of this charge q be suppose at this distance x. Okay, so if another charge q0 comes within the range or within the field of this charge, so this charge experiences some force. Just like I have said, if a body comes within the range of this person, so that body will definitely experience some force. So similarly, if every charged particle possesses some electric field, okay, and why it is a vector quantity? Because suppose let us take this example. So arms can be stretched and this at this direction, at front side, at back side, or any left side, right side, or any direction, any diagonal direction. So similarly, an electric field due to a point charge is distributed throughout the space, symmetrically distributed throughout the space. So this is a vector quantity. So basically, what is the quantity which exerts force on another particle? It is nothing but the electric field, or you can say it is the electric field of a point charge or a charge system which attracts or repels another charge within its field range. Okay, ମୁଁ କହିଲି ଯେମିତି କି ଜଣେ ଏଠି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି
तांकर हाथ कि गोड़ स्ट्रेच करचंदी योगा कला भितरे तो तांकर रेंज टा होची एति की भितरे ही से तांकर हाथ को स्ट्रेच कर परिबे तो सेही रेंज भितरे जदी आउ गोटे पर्सन आसी जाए तो से डेफिनेटली तांको देह रे से माड हबो गोटे फोर्स जनरेट हबो एई मैन ऊपरे ओके सो गोटे ए जो फोर्स क्रिएट हबो that can be attractive that can be repulsive माने एई जो पर्सन का रेंज भितरे जदी आउ गोटे पर्सन आसिला ए पर्सन ताको निज आडको टाणी परिबो नले ठेली देई परिबो ओके सो सिमिलरली गोटे चार्ज पार्टिकल जोटा कि हमर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल सपोज अछि तार भी गोटे निजस्व फील्ड अछि सेति की फील्ड भितरे जदी आउट पार्टिकल अनदर पार्टिकल स्मॉल टेस्ट चार्ज जोटा कि हमें पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कहू तो सेटा जदी आसिला सेई तार फील्ड रेंज भितरे सो ये गोटे फोर्स माने एई चार्ज ऊपर गोटे फोर्स पडिबो आइदर इट मे बी रिपल्सिव और इट मे बी अट्रैक्टिव so electric field टा कोन ना electric field of a point charge or a charge system एटा गोटे चार्ज सिस्टम हे पारे किबा गोटे पॉइंट चार्ज सपोज गोटे ग्लास रॉड किबा गोटे आयरन रॉड एनी चार्ज माने गोटे सिस्टम जदी अछि तो तार जो टोटल चार्ज रो इलेक्ट्रिक फील्ड तार रेंज भितरे जदी आउटे चार्ज पार्टिकल किबा चार्ज सिस्टम आसीबो देन a force is exerted on that system okay so electric field is the region surrounding any charge or a group of charge where its presence can be felt okay so what is the magnitude of electric field so E is F by Q F where F stands for the Coulomb's force between two charged bodies separated by a distance r and divided by the charge which is coming in interaction within the field of another charge okay so basically so जेहेतु कि गोटे एई चार्ज जदी एई चार्ज रो डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड्स सराउंडेड इन स्पेस तो एई डायरेक्शन रे ही पारे लेफ्ट साइड रे ही पारे डाउनवर्ड साइड ही पारे किबा राइट साइड ही पारे कि एनी डायगोनल पॉइंट रे भी तार डायरेक्शन ही पारे तो एनी डायगोनल पॉइंट रे जदी गोटे चार्ज आसिला सो इट कैन बी अट्रैक्टेड और रिपल्ड माने रिपेल्ड with any direction any arbitrary direction so the सेई जो जिंस को हमें कोन कहबा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एटा माइकल फैराडे ए कांसेप्ट देथिले सपोज हियर इज a negatively charged sphere okay so the whole charge is suppose negatively charged okay the whole sphere is suppose negatively charged तो आमे जानिचे जे फोर्स कोन फोर्स due to a negatively charged particle is always towards the particle and force due to a positively charged particle is always away from the particle so suppose gote positively charged particle a point को आसिला किबा any arbitrary point throughout the sphere को आसिला so it will be attracted towards this negatively charged sphere okay and these are on nothing but the lines of force the lines of force generally kon so lines of force hochi the path along which a positive or negative test charge moves in a electric field so gote eta suppose gote positive test charge achi ethi gote ame a gote sorry एटा गोटे पॉजिटिव चार्ज अछि एठी गोटे हमें पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को मन कर आनिबा ये दूरे जीवो किबा पाखे जीवो अट्रैक्ट हबो किबा रिपेल हबो से जो पाथ that is nothing but the electric lines of force so out a basic concept kono suppose if there is a body here okay तो आर गोटे निजस्व जो रेंज इलेक्ट्रिक फील्ड रेंज एटा रहुची ओके सो वेदर ए पार्टिकल ए अनदर बॉडी सी तार कांटेक्ट किबा तार रेंज भितरे आसु कि न आसु किंतु तार निजस्व इलेक्ट्रिक फील्ड माने ये आर आर्म्स टाको एतिकी स्ट्रेच कर परिबो कि एतिकी स्ट्रेच कर परिबो ए जो जिंसटा ता ए बॉडी रो गोटे निजस्व इलेक्ट्रिक फील्ड रहुची सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस बॉडी एक्सिस्ट whether or not any
particle or body or charge is present on its surrounding or not. Okay, so I am electric field definition kon dekhthele, E equal to F by Q0. Okay, the formula, and the unit is newtons per coulomb. Okay, so now we can see some sign conventions. Okay, कौन electric lines of force रो कौन sign conventions हमें नबु. So electric lines of force or electric field lines originates from an isolated positively charged and extend away from the positive charge. Suppose let me just put my pointer again. Okay, there is some problem. Okay, so okay, suppose there is a positively charged particle or positive charge, so electric lines of force is always away from the positively. जेमती हमें Coulomb's law रे देखते जे गोटे positively charged particle द्वारा जो force generate हुए, that is always away from the particle. सेमती the positively charged particles द्वारा जो electric field line generate हुए, that is always away from the particle. जो lines of force हमें जो draw करिवा, that is always away from the particle. And similarly negatively charged particle is always towards the particle. The electric lines of force for a negatively charged particle is always towards the particle, and it terminates माने एठी आसीकी सरीबो, किंतु एठू कोन हबो, एठू आरंभ हबो, originate हबो positively charged particle रू and से away जिवो. Okay, so lines of force are straight if it is due to isolated charges. Suppose गोटे गोटे point charges अछि, तो सेति पई lines of force सब बेले straight रहइबो, and curved if it is due to two or more charges. Suppose दीटा charge पाखापाखी distance को आसिले, so आमे जानछे गोटे repulsion किबा attraction हबो दीटा charge भितरे. So it may the electric lines of force may bend or may attracted. Okay, so I am देखिवा next image slide रे देखिवा, so how the electric lines of force bends. Okay, so another concept kono, the tangent to a line of force gives the direction of the resultant electric field. So एई सब जो जिंस हमें नेक्स्ट स्लाइड रे देखिबा. सो हमें जो फर्स्ट इक्वेशन एठी नैथिले E इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू F by Q0, तो सेटा को हमें जदी F रो इलेक्ट्रिक फोर्स रो हमें फार्मूला पकेबा, लास्ट क्लास रे हम यून पढतिले K Q0 by R square. ओके, तमे R कैप ई सब जिंस बहुत गुडे बही रे लिखाई थिबो, एटा को देखि कि जमा डरिवा किमा कंफ्यूज होवा दरकार नै, काइना मु ऑलरेडी कहिछि जे सब बेले मैग्नीट्यूड नेला बेले आमे मॉडुलस नबा और डायरेक्शन से सेमती स्पेसिफाई करिवा, जेमती आमे साइन कन्वेंशन नेचे जे जदी फोर्स इज रिपल्सिव ताले पॉजिटिव and force is attractive, then आखि बुझी कि एठी उठे नेगेटिव साइन दे दबो मैग्नीट्यूड रे. ओके, so the force formula K is K stands for the constant of proportionality, that is 1 by 4 pi epsilon 0. Again F by Q0 जोटा हमें इक्वेशन नंबर 1 रे लिखले E equal to F by Q0. So ए जगह रे जदी Q0 divide कर दबा, so what is the formula for electric field, what is the formula for the magnitude of electric field, that is KQ by R square R cap. Okay, so as usual sign conventions use हबो, negative positive जहाँ भी सेटा हमें decide करिवा depending upon the charge, माने सेटा negative अछि कि positive अछि. Okay, so जेमति कहितली जे the electric lines of force bend for a group of charges. Suppose दीटा positively charged particle पाखापाखी आसी जाइछंती. Okay, so semana kon hobe, they should repel each other. Okay, so let us see for this positive particle, suppose the lines of force kemti hobo spherically see radially outward jiva katha. Okay, so but since another charge configuration is here, okay, another charged particle, positive charged particle is here, so again that will repel, that will bend away from each other. Okay, so electric lines of force kemti away from each other ହେଇଯାଇଛନ୍ତି right hand side रे किंबा आरो left hand side रे. Okay, so the direction of electric field कोन हमें कहले,
ए जो साइन कन्वेंशंस हमें नहीं थिले किबा जहां भी the electric the lines of sorry the tangent to a line of lines of force gives the direction of resultant electric field. तो एई पॉइंट रे मन कर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करिवार अछि ए पॉइंट रे सो एठी गोटे टेंजेंट ड्रॉ करिवा ओके सो द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ता होची एम्ति बेंड हे जाउची ए जगह रे बट सेठु जेते टेंजेंट हमें गोटे ए फील्ड ए पॉइंट रे ड्रॉ करिवा सो दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ resultant electric field. तो हमें ये जो electric lines of force configuration रू हमें जानी परिवा जे electric lines of force helps us to visualize the direction and magnitude of electric field. तो suppose गोटे configuration देइची and the electric lines of force रे जो arrow mark दिया है that is away from the particle. तो हमें सेठी कहि परिवा जे ए जो चार्ज इट इज ए पॉजिटिवली चार्ज किबा नेगेटिवली चार्ज हमु जो मन कर देइनी ए चार्ज रा वैल्यू किछि ओके सो वी कैन से that whether the charge is a positively charged particle or negatively charged particle again magnitude केमते जानिबा the density of field lines at a point depends on the magnitude of electric field suppose ए एरिया रे मन कर पांचटा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जाउची आ गोटे एरिया रे तीनटा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जाउची तो क्लोजर द फील्ड लाइंस स्ट्रॉन्गर द फील्ड माने जेते क्लोज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हेतिबो सेतिकी स्ट्रॉंग गोटे इलेक्ट्रिक फील्ड हबो आमे गोटे एठी गोटे एग्जांपल मु नेची सपोज देयर इज ए पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर ओके सो तार इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स चारटा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स मु एमती ड्रा करची टू अवे फ्रॉम द पार्टिकल and again there is a charge charge sphere suppose B is the charge sphere and sethre eti 8 electric lines of force draw heichi so if figure A contains charge q suppose figure A contains charge q then go to guess ame kari pariyo what is the charge figure B contains so eti 4 electric lines of force generate heichi eti 8 electric lines of force generated. So definitely here the electric lines of force are closer and the magnitude is and the density is more. So definitely ଏଇଥିରେ ଚାରଟା ଥିଲା ଏଇଥିରେ 8ଟା generate ହେଇଛି ତ definitely this charge would be greater ଏଇଟା 2q ହେଇଥିବ ତ ଏଇ electric lines of force ରୁ ଆମେ magnitude and direction ବି guess କରିପାରିବା. So here is another charge configuration two charges suppose positively charged and negatively charged particles से माने इठी हमें positive नहीं दिले किंतु इठी हमें इठी जदि हमें negative भी नहीं थांते तो direction of जो lines of force जो diagram एमती ही थांता but is arrow mark सबले towards the particle ହେଇଥାନ୍ତା ମାନେ opposite direction ହେଇଥାନ୍ତା okay so here is another charge configuration suppose here is a positive charge and here is a negative charge so electric lines of force due to positively charged सेटा ताठू away outward गला okay left side रे outward गला right side रे भी सेमती for positively charged से कोन हबो ए जो negatively charged particle ए पटे right side रे এটা towards the negatively charged particle गला but এই जो middle point रे माने middle area रे एठी कोन हबो positively charged particle पई away जीवो negative पई towards the negative part जीवो माने ए जो right hand side रे arrow गुडा का सब गुडा resultant electric field रो जो arrow electric lines of force arrow जीवो so ए configuration basically कोन आकु हमें गोटे dipole कहूचे okay so when two equal and opposite charges so suppose are charge both charges are charge equal okay kintu opposite charge suppose eta plus q eta minus q separated by a distance suppose this is r or anything okay so that constitutes a dipole okay so let आमे डाइपोल रो जोगु कोन इलेक्ट्रिक फील्ड आमे गोटे ग्रुप ऑफ चार्ज आमे प्रथमे देखुतिले गोटे पॉइंट चार्ज पई आमे एबे ग्रुप ऑफ चार्जेस पई देखिबा सो ता पूर्वरु आमे देखिबा द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सपोज हियर इज ए चार्ज q1 and here is a charge q2 okay so q1 is separated from point p at a distance r1 and q2 is another charge separated from point p
at a distance r2. Okay, so q1 and q2. So what is the resultant electric field at a point p? Point re resultant electric field कौन हबो? So आमे जेमती principle of superposition of charge रे देखितेले जो force due to at and resultant electric force due to a point is nothing but the force due to all individual charges. Semti the electric field at a point P is nothing but the electric field is the vector sum of electric field due to all the individual charges. So due to q1 by kon hobo e1 equal to k q1 by r square r cap ई सब जिनस ए r cap एगुडा देखि कि एते कंफ्यूज होबा दरकार नै. ओके हमें जेमति साइन कन्वेंशंस नै छे टू मेक आवर things easy for. Okay, so due to q2 by kon hobo e2 equal to k q2 by r2 square. Okay, so principle of superposition kon कहला the net electric field at a point P is nothing but E1 plus E2 plus En. Suppose n number of charges achi. So that is nothing but force by test charge Q0 plus F by Q0 ei sabu formula ame apply kari periya. Suppose force deichi and test charge ro gote value deichi. So electric field bahar kariya pai deichi ame electric field bahar kari periya. Suppose kichi deini kintu distance deichi au এই চার্জ মানଙ୍କର ভ্যালୁ ଦେଇଛି so ଆମେ ଏଇ ଫର୍ମୁଲା ପକେଇକି ବି ଆମେ କ୍ୟାଲକୁଲେଟ କରିପାରିବା. So what is the electric field due to a dipole? Electric field due to a point charge ଆମେ ଦେଖିଲେ and electric field due to a dipole ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା. So let us consider a dipole that is a two equal and opposite charges, so plus q and minus q separated by a distance d. This d distance is very small. That means in atomic dimensions it is very small. For graphical representation we are using like this. Okay, but this d distance is very small. तो आप कौन होगा? Suppose let us find out the electric field due to this dipole at a point P. Okay, so let us consider जे ये जो dipole अछि आर जो center हैला एटा होची ये जो center होची dipole center and जो दी जनक भीतर दीटा charge equal and opposite charge भीतर जो distance that is d and positive charge रू a point जो distance that is r plus and negative charge रू ए जो point p that is r minus. Okay, and ये जो dipole center रू point p that is the distance that distance is distance z. Okay, so let us find the resultant electric field at point p. So resultant electric field kon according to superposition of charge that is nothing but positive charge jogu electric field kete poduchi point p re plus negative charge jogu kete poduchi electric field point p re. Okay, so plus minus it minus symbol ame kahi use kare. Okay, so ei jo z axis re positive charge jogu electric field away from the particle habo mane towards the positive z axis rahibo and electric field at a point p due to this negative charge is towards the particle rahibo. So that this is in negative z axis, so सेति पे हमें एटी गोटे माइनस सिंबल यूज कले. Since it is a vector quantity हमें सब बेले assume करिबा आगो मैग्नीट्यूड को मॉडुलस हिसाब रे लिखि दबा बट डायरेक्शन लिखला बेले हमें कंसीडर करिबा तार पॉजिटिव कि नेगेटिव को डायरेक्शन रे जाउची. ओके, so तार कोन हबो मैग्नीट्यूड? So k q by r plus square एटा होची r plus square due to positive charge. Okay, and minus एठी जेतु कि प्लस माइनस रही गेला तो एटा माइनस हे जीवो minus k q by r minus रो whole square. Okay, and what is k? 1 by 4 pi epsilon 0. Okay, so हमें k काहे की यूज करछे तो माने शॉर्टकट हमें 1 by 4 pi epsilon 0 सब बेले लिखिला रकू हमको असुविधा हो. Okay, so k q by एटा केते हबो r plus टा केते हबो that is nothing but z a distance at center रो point p होची z तो z minus d by 2 एटा केते हबो d by 2 हबो एतिकी डिस्टेंस सेंटर रो पॉजिटिव चार्ज that is d by 2 एटा d by 2 एटा d by 2 मिसी गेला d.
so k cube by z minus d by 2 whole square minus k cube by ए जो r minus टा कौन है जीवो एटा जदी z हला एटा d by 2 हला so total r minus टा है जीवो z plus d by 2 so आमे टिके let us play with the equation okay so कौन करबा आमे ताको टिके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आमे टिके खेलिबा ता सहित ओके सो एंड कॉमन नै जिबा k cube by z square कॉमन नै कि आमे एटी कोन कले ए जो z minus d by 2 अछि आमे सेटा को ए फॉर्म रे लिखि परिबा 1 minus d by 2z रो होल स्क्वायर minus 1 by 1 plus d by 2z रो होल स्क्वायर सेति में आमे एटी गोटे कॉमन नै कले z square क्वांटिटी ओके सो तापरे ता हमर कोन होबो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू k q by z square into 2d by z ए फॉर्म को हमें पळे आसीबा एंड ए जो इक्वेशन हमें पाइले ए जो फाइनल ए इक्वेशन हमें पाइबा एठू हमें कोन करबा डिराइव करबा तार जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड सो हमर जो d by 2z एक्चुअली आमे आमे कोन आमे एटी कैलकुलेट करिया पई चाहू छे जो पॉइंट p रहिची ओके so this point p मु आगुर कहितली जे ए जो डिस्टेंस d that is very small quantity आमे एटी डायग्राम रे देखिया पई एटा कन्वीनियंस पई एते बडो डिस्टेंस देखौ छे बट गोटे डाइपोल बेसी डिस्टेंस रे एग्जिस्ट करि परिबोनी गोटे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बहुत अल्प एटॉमिक डायमेंशंस रे रहिले ही गोटे डाइपोल आमे कहि परिबा ताको okay so this d is very small than this z okay so this z is very larger than d or d is very small than z so ये जो न्यूमरेटर रे हमरो अछि लार्जर क्वांटिटी और एठी अछि बहुत स्मॉल क्वांटिटी तो ए जो क्वांटिटी को हमें कैंसिल कर दे परिबा so 1 minus suppose ए जो टर्म टा हमें कैंसिल कर देबा okay so we can neglect it so finally हमें कोन पाइबा e equal to 1 by 4 pi epsilon 0 2 qd ए जो 2 qd by z cube एटा ए टर्म टा जेहेतु कि 1 है गला तो हमें कैंसिल कर देले ओके सो हमें z cube ए जो फार्मूला e equal to 1 by 4 pi epsilon 0 और k 2 qd by z cube this is the formula for the electric field at a point due to a dipole okay so electric field due to a dipole okay so q out d a q out d गोटे चार्ज एठी हमें देखिले इटा द ए जो डाइपोल रो गोटे चार्ज को हमें कहउचे q पॉजिटिव हो किबा नेगेटिव हो बोथ आर इक्वल हैं तो हमें गोटे चार्ज भी नउचे गोटे डाइपोल रो आ गोटे डिस्टेंस दैट मींस द डिस्टेंस ऑफ द डाइपोल भी नउचे सो एटा गोटे डाइपोल रो गोटे माने कैरेक्टर ओके so आमे एटा को गोटे टर्म देले कोन q into d is nothing but electric dipole moment okay so dipole विषय रे आगामी क्लास गुडा करे मो आउ टिके एक्सटेंसिवली एक्सप्लेन करबी रिगार्डिंग what are the dipoles different types of dipoles केमती से माने ओरिएंटेशन होंती in the presence of electric field what are dielectrics and dipoles को नेले different types of इलेक्ट्रिक फील्ड केमती जनरेट हुए तो सेही विषय रे हमें परे डिस्कस कर कैपेसिटर कोन ओके सो q into d is electric dipole moment okay so q into d is p vector or electric dipole moment vector since distance it would a distance gote quantity roila so this p vector is nothing but the dipole moment vector okay so what is the electric field again so 1 by 4 pi epsilon 0 2 into p that is q into d जदि हमें p नेले so 2 into p by z cube okay so this is a vector quantity so the direction of p is taken from negative to positive end of the dipole so is a dipole moment ro jo direction that is always taken from negative to positive end okay so when the distance of a so आमे एटी जो फॉर्मूला पाइले 2p by z cube और ए z बदल रे हमें r भी लिखि परिबा जेते हमें गोटे फार्दर डिस्टेंस रे गोटे डाइपोल को देखिबा एटा गोटे पॉइंट चार्ज भलिया हमको देखा जिवो एटा गोटे ग्रुप ऑफ चार्जेस भलिया देखा जिवोनी ए
r minus ଆଉ r plus since b is very small, okay, so एटा हमको गोटे point charge भलिया देखा जिवो, so we can in माने z न देकी हमें r भी लिखि परिबा. So direction of electric dipole movement is taken from negative to positive end of the dipole. Okay, so এই জায়গারে যদি এই যে distance যদি half হয়েଯିवो, okay, so when the distance of a point from a dipole is when the distance of a point from a dipole is doubled, এই যে distance from the dipole এটা যদি z বদଳରେ 2z ହେଇ ଯିवो, तो এই जो फॉर्मूला हिसाब रे तार जो इलेक्ट्रिक फील्ड कोन हबो, इलेक्ट्रिक फील्ड at any point drops by 1 by 8 times. That means 2 square जेतळे हे जीवो हैला 2 cube जेतळे हे जीवो 2 into 2 4 into 2 8 1 by 8 times सेटा डिक्रीज हे जीवो इलेक्ट्रिक फील्ड. So आमे प्रथमे देखले जे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज and electric field due to a dipole. माने गोटे point charge के तार इलेक्ट्रिक सराउंडिंग रे केमती इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करछि आ गोटे डाइपोल तार सराउंडिंग रे केते इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करछि. किंतु आमे भी देखिबा जे जदी गोटे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भितरे गोटे पॉइंट चार्ज रहिबो ताहले सीए ता केते फोर्स ता ऊपर पडिबो, तो सेटा आमे एबे नोटिस करिबा. Suppose there is a positively charged distribution, गोटे एटा गोटे इलेक्ट्रिक चार्ज रॉड अछि, तो तार whole cube whole charge suppose positive and suppose तार charge some q, okay, so तार ए जेतु की बॉडी ए जो चार्ज बॉडी होची पॉजिटिवली चार्ज, तो तार जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स सेटा केमते हेबे not away from the particle, if right side रे away from the particle, left side रे away from the body, okay, so एमती तार इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स माने जाइछन, okay, so एई स्पेसिफिक पॉइंट रे आमे कोन करबा गोटे आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज को आनी की रखि देले, तो एई जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होउची एटा कहा पई होउची एई चार्ज रॉड पई होउची, ओके, ए पॉजिटिवली चार्ज रॉड पई एई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होउची. किंतु एठी जदी आमे आ गोटे पॉइंट चार्ज को ए इलेक्ट्रिक फील्ड भितरु को ए रेंज भितरु को आनिले, तो सी केते फोर्स ता ऊपर पडिबो ना F equal to QE, जे जोटा आमे सेते बेले प्रीवियसली देखितले सेही सेम जिंसो सेम फोर्स पडिबो. किंतु एठी कोन हबो, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F acting on a charged particle located in an external electric field. आमे काहे कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कहले काना ए इलेक्ट्रिक फील्ड ता एई चार्ज रो नुओ ड्यू टू दिस चार्ज निज बॉडी ऊपर केबे तारो निजर फील्ड पड़ेनी, आउ गोटे बॉडी जदी से फील्ड रो संस्पर्श रे आसीबो तेबे जाई ता ऊपर गोटे फोर्स पड़िबो, ओके, सो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हैज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इफ द चार्ज q ऑफ द पार्टिकल इज पॉजिटिव. जदी ए पार्टिकल होची पॉजिटिव ताले आ ऊपर केते फोर्स पड़िबो आ जो डायरेक्शन फोर्स पड़िबो, तो एटा होची मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, डायरेक्शन होची direction of the electric field and direction of the electric force is same if this particle is positive, and if this particle is negative then the direction of force and electric field is opposite, okay. So आमे देखिबा एबे ए डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, जेमति आमे देखिले गोटे पॉजिटिव चार्ज गोटे इलेक्ट्रिक फील्ड भीतर आ गोटे चार्ज बॉडी, ओके, आमे अज्यूम करबा जे एटा गोटे चार्ज्ड पॉइंट चार्ज, ओके, तो तार इलेक्ट्रिक फील्ड भीतर आसिले जेतेले गोटे फोर्स केते कोन पडुची देखिले, ओके, सो ए डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. So what is the dipole, what is the electric field, what is the force exerted on a dipole in an electric field. So एठी गोटे assume कले गोटे electric field a direction रे अछि, right hand side direction रे अछि, एटा निश्चित भाबरे किछि गोटे चार्ज्ड एलिमेंट एई जगह रे थिबो, तो जहा फल कि सेई तार गोटे निजस्व इलेक्ट्रिक फील्ड से जनरेट करछि, तो सेई इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भितरे आमे गोटे डाइपोल को रखिबा, ओके.
So dipole कौन होना है, positive charge and negative charge separated by a distance d. So d is the distance here. Okay. So electric dipole moment ର direction ଆମେ ଏଠି କଣ ଲେଖିଥିଲେ direction of electric dipole moment is taken from negative to positive end of the dipole. So electric dipole moment vector जो अछि तार direction ଆମେ एई direction रे दबा ए जो diagonal type रो जो देखा होछि हमको. So that is the negative to positive direction रे रहिला. So ए जो electric field आउ ए जो electric dipole moment ता भितरे जो angle टा हमें इटा theta consider कले. And ए जो दीटा charge रहिला equal and opposite charges तार जो dipole तार जो center of mass रहिला इटा होछि center of mass. Okay. So electric field due to positive charge is always in the direction of electric field. I mean, if just देखिଥିଲେ, okay, due to a point charge हमें देखिଥିଲେ. So it right side गला, and electric force due to the negatively charged particle इटा कौन करिबा हमें left side रे जीवो force. So इटा minus f लिखा हो, इटा plus f लिखा हो. So कौन होगा, the electric forces acts on माने कौन होची, since the field is uniform the net force on the dipole from the field is zero. Okay, net force on the dipole from the electric field माने ए electric field ए जो dipole ऊपर जो net force पकोची इटा positive direction रे इटा negative direction रे. So and equal and opposite अछि तो नेट फोर्स होची 0 एंड द सेंटर ऑफ मास एटा जो सेंटर ऑफ मास एटा मूव करिवनी. ओके, किंतु कोन हुए जनरली आमी जेमती 11th क्लास रे स्टडी करछे, फोर्स न पड़ले भी गोटे चार्ज्ड एंड्स रे ए जो इलेक्ट्रिक फील्ड ए चार्ज ऊपर जेतले इंटरेक्शन रे आछी ये आकू तळकू टाणिया पई चाहूची. ओके, सो एई जो चार्ज इंटरेक्शन रे जेतेबेले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरेक्शन रे जेतेबेले एई चार्ज आसुची, सो ये ऊपर को जिया पई चाहूची. ओके, किंबा वाइस वर्सा ये ऊपर को जिया पई चाहूची, ये तळ को जिया पई चाहूची, ए माने मूव करिया पई चाहूचंदी. सो इट इज द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी, ability of a force to rotate one body. Okay, so that is nothing but torque. Okay, so आमे इटी देखिबा the charge ends रे इट जो फोर्स पडुची ये डाइपोल ए टोटल सिस्टम को रोटेट करिया पे चेष्टा करूची. ओके, जो जदियो नेट फोर्स होची 0 बट a torque acting on the whole dipole. So कौन एठी हमें देखिबा the center of mass suppose lies on the line connecting the charged end at some distance x from one end. Okay, so गोटे end रो suppose distance होची x and another end रू distance होची d minus x. हमें देखितले ये total distance होची d, so definitely another end रू d minus x होबो center of mass. तो हमें क्लास 11th रे पढ़थिले जो टाउ जोटा कि टॉर्क हमें कहूचे, टाउ रो फार्मूला कोन, टॉर्क रो फार्मूला होची rf sin phi. Okay, sin theta or sin phi, where r is the distance and radial distance, f is the force and sin theta is the angle between the here it is the angle between the dipole moment vector and the electric field. So tau को हमें कौन केमती लिखिबा, so suppose एटा गोटे x axis रो direction, so fx sin theta plus f d minus x sin theta हमें नेले जे हमें consider कले जो x होची from गोटे end रो distance आ गोटे end रो distance होची d minus x. Okay, so fx sin theta plus fd sin theta minus fx sin theta, so minus plus कटी हेगी last रहला fd sin theta. Okay, so tau is nothing but fd sin theta. So force रो value कोन हम जानचे f equal to qe. Okay, so tau कोन होई जिवो एबे tau equal to qed sin theta. Okay, so tau is nothing but electric dipole moment, जेहेतु कि q into d होची electric dipole moment, so p e sin theta, so where p equal to qd हमें just पूर्वरु देखले जे p equal to qd. so ये जो p e sin theta हमें जो देखुछे
So एटा कौन आमे जदि दीटा p गोटे वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड गोटे वेक्टर एंड तार जो मैग्नीट्यूड अछि सो p e sin theta, that means that is nothing but curl of p cross e or cross product of p cross e. That means cross product of torque is nothing but the cross product of electric dipole moment and electric field. So direction एटा होची magnitude. Okay, so direction आमे केमति नबा जदि anti clockwise dipole बुलिया पई चेष्टा करछि then it is positive and जदि clockwise होची then एटा negative answer asibo. Okay, so in the next class we'll discuss some problems on electric field due to a point charge and a electric field due to dipole, and also we'll discuss the electric field due to different charge configuration. Suppose गोटे square plate अच्छी किंबा गोटे sphere अच्छी किंबा गोटे cylinder अच्छी, so a charge cylinder अच्छी तो से मानक पई electric field केमती हमें calculate करिवा, that we can discuss in the next class. Okay, so thank you very much for today. Please like and subscribe my channel. Thank you.